मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों की ये कहकशां स्वीट होम के बच्चों, सरकारी स्कूलों के बच्चों, निजी स्कूल के बच्चों और स्ट्रीट चिल्ड्रन समेत तमाम तबकात की नुमाइंदगी कर रही है। हमने ये मुनासिब समझा कि बच्चों की पार्लियामेंट को बच्चे खुद चलाएं, तमाम सरगर्मियां बच्चे खुद अदा करें। हमें उम्मीद है कि ये अजीम बच्चे जो आज बच्चों की पार्लियामेंट को चला रहे हैं, ये मुस्तकबिल में कौमी उमंगों का मरकज़ यानी कौमी पार्लियामेंट को आली शान अज़्म के साथ चलाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ बाजार से खरीदारी करने जाता हूँ, तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बैरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कॉपियां, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं, मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहां बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। Mr. Speaker, the theme of today's convention is Azme Ali Shan, the symbol of high resolve. While I thank this august house for conferring this title onto us, may I beg to respectfully ask this house if it has ever truly resolved to alleviate the plight of children, the Azme Ali Shans of this country. Mr. Speaker, on one hand, we vow to end child bride culture, yet can't decide amongst ourselves if 14, 16 or 18 is the marriageable age cap of a child. We speak volumes about Article 25A, the right to education, yet end up being the country with second highest out-of-school children in South Asia. We hear promises of equal opportunities, but a look around my side of the aisle is enough to establish the reality of that claim. We hear slogans of ending child labor and street beggary, but a glance at the road outside or a peep into our households tells a different story altogether. I ask, Mr. Speaker, why does it take the brutal murder of children like Zainab or the media trial of cases like Dua-e-Zehra to jolt the policy makers that we, the children, too exist in this society whose very rights too need protection? Is there any unsaid rule that lesser the age, lesser the attention, and lesser the resources we spent on you? Must I remind this house that 75 years ago, on this very day, the Constituent Assembly of Pakistan had only 2 agenda items on its orders of the day, one of which was appointment of committee on fundamental rights of citizens and minorities of Pakistan. Rights of citizens, Mr. Speaker. It did not say rights of adults, elderly, men, women, or transgenders. If the state and constitution do not discriminate us on these grounds, why do policy makers then? Mr. Speaker, while I leave this question with all of you, I would like to conclude by requesting a commitment and resolve from this house. Let's pass a resolution today to make this Children's Parliament an annual feature of proceedings of this house, where every year children from the lengths and breadths of Pakistan are invited just to be heard. I would further propose that a parliamentary forum on Child's Rights Caucus may also be established in the National Assembly of Pakistan
so that our esteemed legislators team up to work on policies and legislations with a child-centric lens. In the end, I hope, Mr. Speaker, that both my suggestions would be taken up and adopted by my Parliament. Rehbare tarakkiyo kamal. With this, I thank you once again for this profound opportunity.